Hello everyone, this is Dr. Sunil Chandan Shive, and in this video we are going to understand the various multiple choice questions and their answers of the topic revenue analysis, which is a very important topic for the microeconomics. And this topic can be for FYBCom, FYB, or for the competitive exam like a NET set and others. So in this video we are going to understand the various multiple choice questions and their answers of the three different topics under the revenue analysis. Number one, concept of revenue. In that there are different concepts are there like a total revenue, average revenue and marginal revenue. So what is the TR, AR and MR under the perfect competition and monopoly market? Regarding that some questions we are going to discuss. Then there are certain objectives of the business firm. There are three important objectives are there. Number one, profit maximization, sales maximization, which is presented by the Baumol, and growth maximization. This is the one of the objective of the business firm presented by the Robin Morris. Then third important content, that is break-even analysis. So in detail we are going to understand the various multiple choice questions of these three important topics under the revenue analysis. So let's begin with the first question. The first question is about total revenue is equal to dash dash. यहाँ पे पूछा गया कि total revenue का formula क्या है. So the correct answer is A. Total revenue is calculated with the help of price into quantity. Total revenue क्या होता है? It is amount of money which is received by the seller by selling certain quantity into the market at certain prices. So in this case, the price and quantity is very important. So if you multiply price with the quantity, we will get total revenue. Okay, next question. Under perfect competition, dash dash. And the correct answer is B. Under perfect competition, marginal revenue and average revenue both are same. Average revenue is always equal to marginal revenue. So that even you can see in the table also. In the table you can see in the perfect competition the price is the same and different quantities sold at same prices, so that we get the total revenue which is increasing in a constant rate. And based on that if we calculate the average revenue, formula इसका क्या है? Total revenue upon quantity. So we'll get 10 10 10 average revenue, and the marginal revenue also, that is 10. Marginal revenue का क्या formula है? The change in total revenue divided by change in quantity. So the average revenue and marginal revenue both are same in case of perfect competition. So the correct answer is B. Okay. Then next question is about dash dash revenue is the revenue obtained from selling additional unit of output or the product. And the correct answer is marginal revenue. So the correct answer is B. Marginal का मतलब ही होता है additional. तो marginal revenue means it is an additional revenue received by the seller by selling additional quantity of output. Okay, so the correct answer is B. Then third question, average revenue is equal to dash dash per unit of output. Okay, so the correct answer is C. यहाँ पे correct answer है because average revenue is equal to the price of the products. Generally average revenue और price दोनों same होते हैं. Average revenue is the on an average revenue received by the seller by selling on an average one quantity of output. So therefore correct answer is C. Next question, under dash dash price is equal to average revenue and average revenue is equal to marginal revenue. So under what market? So the correct answer is A here, because in the perfect competition, when the seller sells the different quantity at the same price, at the constant price, at that time price, average revenue and marginal revenue, three of them are equal because price of the product is the same. So therefore in the diagram also you can see AR is equal to MR
and TR is increasing in a constant rate, and this is the price of the product is also 10. So the price, average revenue and margin revenue, three of them are same into the perfect competition. So the correct answer is A. The next question, under imperfect competition or under monopoly market, dash dash. Under monopoly market, always average revenue is more than marginal revenue, because in a monopoly market, the sellers sell the different quantity at a different prices. This price discrimination is there into the monopoly market, and therefore in a monopoly market जो average revenue है वो always more than marginal revenue, or marginal revenue lies below side of average revenue curve, so that you can see in the diagram also. So the correct answer क्या होगा? Yes, you're right, A is the right answer. The next question in the revenue part, that is average revenue is equal to dash dash, and the correct answer is यहाँ पे expected है average revenue का क्या formula है. Okay, so average revenue generally we calculate on the basis of total revenue upon quantity. तो यहाँ पे correct answer क्या होगा? Yes, definitely C will be the right answer. Yes, these are different 4 options are there. Just we are going to discuss only the right answer and what is उसके पीछे reason क्या है. So that we are going to understand. So the correct answer is C, because average revenue generally we calculate on the basis of total revenue upon quantity. Then next question, under monopoly dash dash, मतलब यहाँ पे expected है again the same. under monopoly के अंदर average revenue marginal revenue कैसे होते हैं, and the correct answer is marginal revenue always less than average revenue, or marginal revenue is the below side of average revenue curve. So the correct answer is A. Okay, then next question, under monopoly more can be sold dash dash. It means under a monopoly market more and more quantity of output can be sold at a different prices or at a lower prices. So here the correct answer will be C, at a lower price. मतलब as we decline the price of the products, we can sell more and more quantity of output. So the correct answer will be C here. Okay, the next question, under perfect competition demand curve of the firm is dash dash. Yes, perfect competition में demand curve का shape कैसा होता है, मतलब average revenue कैसा होता है. Yes, already that part we have discussed, because under perfect competition the price of the product is the same, and at the same price when the sellers sell the homogeneous quantity into the market at that time, so therefore the average revenue and marginal revenue both are perfectly elastic. So the correct answer will be demand curve कैसा होता है perfect competition में, perfectly elastic होता है. So the correct answer will be B. Okay, then next question again, average revenue dash dash, and the correct answer क्या है देखते हैं. पहले हम ऑप्शन देखते हैं, इसके 4 ऑप्शन है यहाँ पे. एवरेज रेवेन्यू निगेटिव होता है क्या? यस, कभी भी निगेटिव नहीं होता है एवरेज रेवेन्यू. ओके, कीप इन माइंड. सेकेंड बी ऑप्शन है, इज जीरो व्हेन टीआर इज जीरो. यस, ये होता है. द टीआर इज जीरो डेफिनेटली एवरेज रेवेन्यू भी जीरो हो सकता है. देन सी ऑप्शन, कैनॉट बी नेगेटिव. यस, एवरेज रेवेन्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है, वो जीरो हो सकता है. व्हेन द टीआर इज जीरो एवरेज रेवेन्यू जीरो हो सकता है, या फिर एवरेज रेवेन्यू कभी निगेटिव नहीं होता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी हियर डी. ओके, B and C is the correct answer. Okay, then next question is about, when total revenue increases at a constant rate, marginal revenue should be dash dash. Yes, already that part we have discussed. In a perfect competition total revenue increases in a constant rate because the price of the product is the same. So यहाँ पे in the table also you can see different quantities sold at same prices, so therefore total revenue is increasing in a constant rate, like 10 10 10 का difference है, right? And therefore the marginal revenue कैसा यहाँ पे 10 10 10 है, right? So the marginal revenue will be the constant, like
10. Okay, so therefore यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? B will be the right answer. Okay, then next question is about when marginal revenue is zero, then dash dash. जब marginal revenue zero होता है तो total revenue maximum होता है. Okay, so the correct answer will be C. When the marginal revenue is zero, total revenue will be maximum. And when the marginal revenue becomes a negative or minus, total revenue start falling. Okay. Then next question, under perfect competition dash dash. Again the same repeated question. Under perfect competition में क्या होता है? Price is equal to average revenue and average revenue is equal to marginal revenue. So the correct answer will be A. Okay. करेक्ट आंसर यहाँ तो डी दिखा है, तो हम आगे के ऑप्शन देखते हैं. यहाँ पे ए तो राइट है. देन सी देखते हैं. मार्जिनल रेवेन्यू इज बिलो ऑफ ए आर, ये तो गलत है बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज में होता है सेम अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये तो सी इज गलत. देन एवरेज रेवेन्यू रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी ठीक है. तो यहाँ पे एक्चुअली करेक्ट आंसर इज हियर नॉट सी और ए भी नहीं है. अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द करेक्ट आंसर इज हियर ए. ठीक है, आई विल राइट हियर द करेक्ट आंसर इज ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट ऑफ एवरेज रेवेन्यू? एवरेज रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला है? एवरेज रेवेन्यू we calculate on the basis of total revenue upon quantity. Average revenue is the generally on an average revenue received by the selling on an average one quantity. So that is the A is the right answer. Okay. Then next question, which of the following is the equation of marginal revenue? Marginal revenue का क्या formula है? And the correct answer is marginal revenue is equal to change in total revenue divided by change in quantity. Yes, change in मतलब what is an additional revenue received by the seller by selling additional quantity. So this is what the B is the right answer. Okay, the next question is about when seller sells 50 units at 20 rupees each, then his total revenue is dash dash. And the correct answer क्या होगा? Total revenue का क्या formula है? यस, प्राइस इनटू क्वांटिटी. तो प्राइस कितनी है? 20 एंड कितनी क्वांटिटी सेल की है? दैट इज 50. तो 20 इंटू 50 करोगे तो हाउ मच टोटल रेवेन्यू यू विल गेट? यस यस, 1000. सो द करेक्ट आंसर इज ए. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर मोनोपोली firm and industry demand are dash dash. Yes, in a monopoly market there is only single firm is there, so there is no any kind of distinguish या फिर वहाँ पे कोई firm and industry both are same under monopoly market. So therefore under monopoly industry and firms demand both are same. Okay, so the correct answer will be A. Then next, these are the questions on the objective of the business firm. Already the first question in that, the slope of total cost curve is measured by dash dash. Total cost curve का slope कैसे measure करते हैं? And that is measured by marginal cost. Okay, so the correct answer will be D. The next question, which of the following statement is not true for economic profit? And there are 4 options are there. तो कौन सा statement true नहीं है in case of economic profit? So we will understand one by one. जैसे कि economic profit are determined by economic principle. Yes, ये right है. Then B option, it used to determine the market entry, stay and exit. मार्केट में एंट्री कब करनी है, उसमें कंटिन्यू बिजनेस करना है कि नहीं, या फिर एग्जिट कब करना है. सो इट ऑल्सो डिटरमाइन. यस, दिस बी इज ऑल्सो राइट. देन इट ऑल्सो इंक्लूड, इट ओनली इंक्लूड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. नहीं, ये गलत है बिकॉज इकोनॉमिक प्रॉफिट में हम जनरली while calculating economic profit formula क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट.
So in the total cost, generally we include explicit cost plus implicit cost. So C is not right. Then D option है, it includes both explicit and implicit cost. तो यहाँ पे गलत ऑप्शन कौन सा हो गया? दैट इज सी. ओके, तो द करेक्ट आंसर विल बी सी. ओके, then next question is about total revenue curve of the firm in perfect competition is a straight line because perfect competition में total revenue curve straight line क्यों होता है? yes obviously because perfect competition में price कैसी होती है? constant होती है या फिर homogeneous होती है, and because of that reason only the total revenue curve increasing in a constant rate, it is upward sloping. Okay, so the correct answer is C. Then next question is about a minimal income which entrepreneur must get in order to stay in business is. अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को एक मिनिमम इनकम चाहिए होता है, वो क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज सब नॉर्मल प्रॉफिट. मतलब यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा? द फर्म शुड एबल टू रिकवर देयर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. लेकिन सी में क्या है कि द फर्म शुड कवर एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट. जो वर्कर्स है, वर्कर्स का चार्जेस है, जो भी वेजेस है या फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, सो एटलीस्ट दैट कॉस्ट द फर्म नीड टू रिकवर, देन the firm can think about to stay in a business. Okay, so therefore यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? सी. मतलब एटलीस्ट उसको वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर होना चाहिए, फिर एटलीस्ट उसको सब नॉर्मल प्रॉफिट तो मिलना चाहिए, देन द फर्म कैन थिंक अबाउट टू स्टे इन अ बिजनेस और टू कंटिन्यू इन अ बिजनेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज गिवन बाय dash. Yes, sales maximization objective is presented by the Professor Baumol. Yes, you're right. B is the right answer. Then next question, sales maximization is likely to take place in market that are dash. And the correct answer will be sales maximization generally is undertaken, it is taken place by the oligopolistic firm, right? Because there are only few firms are there and they're focusing on the sales maximization. Okay, so the correct answer will be B. The next question is about a firm is producing output at which profit is maximized if it produces more output than dash. अभी यहाँ पे आपको देखना ज़रूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में आपको डायग्राम दिखाता हूँ. तो इन द डायग्राम यू कैन सी दिस इज व्हाट एवरेज रेवेन्यू. थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए, एवरेज रेवेन्यू है ये, एंड दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू. ओके, दिस इज द एंड दिस इज व्हाट कर्व? मार्जिनल कॉस्ट कर्व. ओके, यहाँ पे ऐसा लिखा है सपोज. अब दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड यहाँ पे क्या लिखा है कि अ फर्म प्रोड्यूसिंग आउटपुट एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज. तो प्रॉफिट इज जनरली मैक्सिमाइज एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा. बट आफ्टर दैट, मतलब इफ द फर्म इज गोइंग टू प्रोड्यूस द लेवल ऑफ आउटपुट मोर देन OQ, मोर देन दिस लेवल ऑफ आउटपुट, देन व्हाट विल हैपन? द कॉस्ट विल राइज and the marginal cost will decline. मतलब marginal revenue will be less and the cost is going to rise. मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर will be marginal cost will exceed marginal revenue. So the correct answer will be A. Okay. Then next question is about which of the following statement is not true of sales maximization objective, and the correct answer is yes, A. A is the right answer because यहाँ पे सेल्स मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे लिखा है कि इट डज नॉट कंसिडर द प्रॉफिट. यस, इट कंसिडर द प्रॉफिट. द बॉमल सेज दैट द फर्म का ऑब्जेक्टिव है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट नहीं कमाना है. द फर्म इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज देयर सेल्स रेवेन्यू ऑल्सो. सो देयरफॉर ये ट्रू नहीं है, इट डज नॉट कंसिडर द प्रॉफिट.
Yes. So the correct answer will be A. The next question, which of the following statement is true of the growth maximization objective? कौन सा स्टेटमेंट राइट है, करेक्ट है इन केस ऑफ ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव? तो यहाँ पे वन बाय वन वी विल से इट इज अचीव्ड एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर MC इज इक्वल टू MR. देखते हैं. Then it aims at maximizing sales volume only. It is subject to managerial and financial constraint. Yes, it is subject to managerial and financial constraint. ये right answer है इसका. तो correct answer देखो ये C है. These are the different constraint need to be faced by the manager and the owner. That is managerial and financial constraint. That is the correct answer will be C. The next question, in Mari's growth maximization model, manager tries to maximize his satisfaction, and his satisfaction lies in the dash dash of the firm. His satisfaction generally lies in the growth of the firm. Growth मतलब the firm is trying to maximize the balanced growth of the business firm. ठीक है, तो यहाँ पे correct answer क्या होगा? Growth. The B is the right answer. Sales नहीं, sales actually गलत लिखा है. The growth is the right answer. So I will correct it here. B is the right answer. Okay. The next question, according to Maris, the utility function of manager depends on. Utility function manager का क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है? What manager wants. तो manager को क्या चाहिए होता है? He wants more salary. He wants status into the business, into the firm. He wants power, ज़्यादा power चाहिए उसको, और ज़्यादा job security चाहिए. Okay, so the correct answer will be D. ये चार important utility function है किसके? Managers के. Okay, so the correct answer will be D. तो वैसे next question है opposite to this. The objective मतलब according to Maris, the utility function of owner depends on what? ओनर का यूटिलिटी फंक्शन क्या है? ओनर क्या चाहता है? सो द करेक्ट आंसर यहाँ पे ए है. ओनर वांट्स मोर प्रॉफिट, और ओनर वांट्स साइज ऑफ आउटपुट शुड बी मोर, देयर शुड बी मोर सेल इनटू द मार्केट. मार्केट शेयर ज़्यादा होना चाहिए, उस बढ़ाना उसका जनरली ऑब्जेक्टिव होता है. एंड इमेज ऑफ द फर्म इन द पब्लिक. सो द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ ओनर इज डिपेंड्स ऑन द profit, size of the output, market share, and image of the firm into the public. So the correct answer will be A. The next question, according to Maris, the growth in demand is reflect in the interest of dash dash, and the correct answer will be, yes, you are right. Correct answer is D. मतलब मारिस क्या कहता है कि the growth in demand is reflect in the interest of consumer, owner of the business firm, and manager of the firm. Okay, so the correct answer is D. The next question, maximization of firm's growth rate subject to managerial and financial constraint as one of the important alternative objective of especially large business corporation was pleaded by. Yes, growth maximization किसने प्रेजेंट किया है? रॉबिन मारिस ने. So the correct answer will be C. Okay. Then next question is about, while maximizing the balanced growth of the firm, the manager faces two important constraints. Number one, managerial, and the second is financial limitations, or financial constraint. So these are the generally two important constraints faced by the manager while achieving the balanced growth of the business firm. So the correct answer is A. Okay. The next question, growth maximization is the same as what? B is the right answer. Growth maximization is the same as maximization the growth of sales revenue. फर्म की ग्रोथ भी करनी है और रेवेन्यू सेल्स भी बढ़ानी है. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज। अभी ये क्या है, मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो राइट है, तो एंड व्हाट इट इंडिकेट्स, जनरली इसका राइट आंसर क्या है, टोटल कॉस्ट, मतलब यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों कंसिडर होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट जनरली वी कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, एंड टोटल कॉस्ट में क्या इन दोनों इंक्लूड होगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, the correct answer will be B. Okay, now we come to the third important concept or the topic in the revenue analysis, that is break-even analysis. Yes, in the break-even analysis क्या होता है generally, it is a no profit no loss situation है, मतलब इसका ये बहुत interesting topic है. So under the break-even analysis, there are different questions are there. देखो, a firm is at break-even point when, जब firm break-even point पे कब होती है, break-even point आपको पता है, it is a situation where the total revenue is equal to total cost. firm को profit भी नहीं होता है, firm को loss भी नहीं होता है, no profit no loss. So the correct answer will be B. Okay, then break-even point is reached when firm dash dash, and the correct answer is the firm earn zero profit. मतलब फर्म को लॉस नहीं होता और प्रॉफिट भी नहीं होता है, द फर्म इज कवर देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, तो द फर्म व्हेन अर्न जीरो प्रॉफिट, द फर्म इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम पॉइंट और द फर्म इज सेड टू बी इन ब्रेक इवन पॉइंट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन इट्स, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब फर्म का टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल कॉस्ट. सिंपल है ये, राइट. सो द करेक्ट आंसर विल बी टोटल रेवेन्यू इफ इट्स मोर देन टोटल कॉस्ट. द करेक्ट आंसर विल बी सी. यस, यू आर राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, एट द ब्रेक इवन पॉइंट द प्राइस इज इक्वल टू डैश डैश कॉस्ट. ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, प्राइस किसके बराबर होती है, एवरेज कॉस्ट के, मतलब द फर्म इज गोइंग टू रिकवर देयर एवरेज कॉस्ट. द फर्म को प्रॉफिट भी नहीं और लॉस भी नहीं होता है. So right, the answer will be what, C. Yes. Okay, the next question is, at the shutdown point the price is equal to what, average variable cost. मतलब shutdown point पे क्या होगा, the firm is able to, firm is going to recover only its variable cost. Okay, and if the firm is not going to recover their variable cost, then firm need to think about to shut down the business. Okay, so the break-even point क्या होगा, it is a situation where the price is equal to average variable cost. So correct answer will be C. The next question देखते हैं, when the fixed cost dash dash the break-even point is reached at the higher level of output. मतलब जब फिक्स्ड कॉस्ट कम होगा या फिर बढ़ेगा या फिर सेम रहेगा, तो जो ब्रेक इवन पॉइंट इज रीच्ड एट द हायर लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब तो ये फाइंड आउट करना है हमें. तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा जब फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा या फिर कम होगा. तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, इफ वी कंसिडर द फिक्स्ड कॉस्ट इज 3000, प्राइस इज 12 एंड एवरेज कॉस्ट इज 6. सो by considering this, if we calculate the break even sales quantity, so the answer will be what, 500. But if we increase the fixed cost from 3000 to 4500, then what happen, break even sales quantity is going to increase. It means यहाँ पे आंसर क्या होगा, when the fixed cost increases, the total level of output will increase and the break even point will reach at a higher level of output. Okay, so the correct answer will be C. The next question, which of the following are characteristics of break even point. break even point के कौन से characteristics है, and the correct answer is D. all these, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, there is no loss and no profit for the business firm, ये right है.
टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये भी राइट है, एंड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज आल्सो राइट. So the correct answer will be all of the above. Okay. The next question, which of the following are limitations of break-even analysis? And the correct answer is A. Static concept है ये. Okay. Then next question, a break-even point changes whenever there is a change in dash dash. मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट फैक्टर्स, कौन से फैक्टर में चेंज होता है तो ब्रेक इवन पॉइंट चेंज होता है. एंड द करेक्ट आंसर इज यस, डी इज द राइट आंसर. मतलब व्हेन द प्राइस, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज, द ब्रेक इवन पॉइंट विल आल्सो चेंज. ओके, so this is a very very important. Then next important question is there, that is देखो, ब्रेक इवन पॉइंट इम्प्लाइज डैश डैश. ब्रेक इवन पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर दिस इज जीरो प्रॉफिट. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? गलती से यहाँ पे बी लिखा है, सो द करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट इम्प्लाइज व्हाट? जीरो profit. Okay, so the correct answer is C here. Okay, then next question is break even point that represent the level of output at which, break even point represent the level of output at which the total revenue is equal to total cost. So the correct answer will be what? C is the right answer. Right. The next question, contribution is also known as dash dash in a break even analysis. contribution को क्या कहते हैं जनरली? yes, contribution margin भी कहते हैं. yes, correct answer will be A. the next question देखो, profit is equal to dash dash. profit का क्या, profit कैसे calculate करते हैं? what is the formula to calculate the profit? yes, and the correct answer will be B. profit generally we calculate on the basis of total revenue minus total cost. total revenue से हम टोटल कॉस्ट माइनस करते तो हमें प्रॉफिट मिलता है. इफ देयर इज अ टोटल रेवेन्यू, इफ इट इज लिटिल मोर देन प्रॉफिट होगा. अदरवाइज इफ द टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट तो वहाँ पे लॉस हो सकता है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन प्राइस पर यूनिट लीड्स टू डैश डैश ब्रेक इवन क्वांटिटी. मतलब जब प्राइस बढ़ेगी तो ब्रेक इवन क्वांटिटी बढ़ेगी या फिर कम होगी? अगेन हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. देखो यहाँ पे प्राइस 12 है, फिक्स्ड कॉस्ट 3000 एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 6 है. सो एट दैट टाइम ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी कितनी आएगी? इफ यू कैलकुलेट 500 आएगी. लेकिन सपोज हमने प्राइस बढ़ा दी, फ्रॉम 12 to 14 कर दी, तो ओनली वी आर गोइंग टू चेंज द प्राइस, इंक्रीज द प्राइस. सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी? 375. मतलब जब हमने प्राइस बढ़ाई तो क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई, फ्रॉम 500 to 375. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? एज वी इंक्रीज द प्राइस ऑफ आउटपुट, द ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी विल डिक्रीज. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, शटडाउन पॉइंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट आर डैश डैश. शटडाउन पॉइंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट डेफिनेटली दोनों अलग अलग है. शटडाउन पॉइंट मतलब क्या होता है? इट इज अ पॉइंट वेयर जस्ट फर्म रिकवर देयर एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एंड ब्रेक इवन पॉइंट मतलब वहाँ पे द फर्म इज गोइंग टू कवर देयर टोटल कॉस्ट. मतलब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. सो द यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? डेफिनेटली सी होगा. ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट है. Then next question is about break-even point is easily worked out in case of dash dash. And the correct answer is single product में generally easily worked out होता है. In case of multiple products, it is very difficult to calculate the combined cost of the multiple products. So therefore, generally break-even point easily worked out in case of single product. So B is the यहाँ पे B is the right answer. Okay, so I'm going to take B is the right answer. ये गलत है, ठीक है. Then next question, break even analysis compare total revenue with dash dash.
break even analysis compare total revenue with total cost. एवरेज कॉस्ट भी नहीं, मार्जिनल कॉस्ट भी नहीं और नन ऑफ द अबव भी नहीं, तो आंसर विल बी ए. Then next question, break even analysis help the firm to determine dash dash for given level of output. Yes, always the break even point help the business firm to determine the minimum cost, and at that cost how much the firm need to produce the level of output. The correct answer will be minimum cost, or A is the right answer. And I think this is the last question. The break even analysis is referred to as dash dash, and the correct answer is break even analysis को हम generally क्या कहते हैं? Yes, cost volume profit analysis भी कहते हैं, उसको अलग नाम से भी जाना जाता है. So the correct answer will be A here, right? Okay students, this is the end of this presentation, or you can say that these are the all different MCQs we have discussed of the revenue analysis. So if you like this video, please subscribe to my channel, or if you have any questions, or if you have any doubts, you can write into the chat box, or you can comment below the video. Thank you so much for watching this video.